Hello, good morning everyone. Very warm welcome to BABYCODE free TOEFL sessions. I am Nirvani, an IDP certified trainer and a TOEFL and TESOL certified trainer. I'm back with my live session number 8 and आज हम करने वाले हैं अपना listening module, right? So आज हम listening module start कर रहे हैं. The very first topic which we will cover here, जो आज हम करेंगे वो है just content and just purpose questions. तो लिसनिंग में जो जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्वेश्चंस होते हैं कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले तो लिसनिंग में आपके 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं. जिस कंटेंट, जिस पर्पस, डिटेल क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर्स एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन, इन्फेरेंसेस क्वेश्चंस, ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस एंड कनेक्टिंग कंटेंट. तो ये सारा हम लिसनिंग में कवर अप करने वाले हैं. बट टुडे वी विल स्टार्ट विद जिस कंटेंट एंड जिस पर्पस. लिसनिंग सेक्शन जो आपका डिवाइडेड है, यू कैन सी कि आपको जिस कंटेंट के 3 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, राइट. क्वेश्चंस हमेशा पैराफ्रेज होते हैं लाइक दिस. जिस पर्पस के आपको 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं. डिटेल क्वेश्चन 6 to 10 आते हैं. देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर एटीट्यूड में आपके 1 to 4 क्वेश्चन आते हैं. अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन 3 to 6 होता है. मेकिंग इन्फ्लुएंसेस में आपके 1 to 4 क्वेश्चन होते हैं. अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन में 2 to 5. कनेक्टिंग कंटेंट में आपके 1 to 4 क्वेश्चन होते हैं. और ऐसे आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, पैराफ्रेज्ड होते हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट लिसनिंग मॉड्यूल. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद जिस कंटेंट एंड जिस पर्पस. जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्या होता है. जिस का मतलब होता है समराइजिंग, मेन पॉइंट. उसकी समरी क्या है, उसका मेन आइडिया क्या है, की आइडिया क्या है, मेन पॉइंट क्या है. तो किसी भी चीज का जिस्ट का मतलब उसकी समरी क्या है, राइट. उसका मेन आइडिया क्या है, क्या वो आपको कन्वे कर रहा है. तो जिस कंटेंट क्वेश्चन में आपको क्या आइडेंटिफाई करना होता है, यहाँ पे आपको मेन आइडिया जो है, मेन टॉपिक जो है कन्वर्सेशन का या लेक्चर का, वो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. तो जिस कंटेंट क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया या फिर मेन टॉपिक उस लिसनिंग कन्वर्सेशन या लेक्चर का, राइट. और जिस पर्पस क्या होता है, जिस पर्पस क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिफाई करना होता है मेन पर्पस कन्वर्सेशन का, कि क्या पर्पस है इस कन्वर्सेशन का, राइट. सो यू कैन रिकॉग्नाइज जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्वेश्चन बिकॉज वो फ्रेजेस की तरह यूज होते हैं. दे यूज फ्रेजेस. जैसे कि कंटेंट के लिए आपको क्या यूज होगा, फ्रेज मेनली अबाउट, मेनली डिस्कसिंग. लेकिन अगर आप पर्पस क्वेश्चन कर रहे हो तो व्हाई डज द स्टूडेंट सेड दिस, व्हाट इज द मेन पर्पस, तो उसमें क्या होते हैं, आपके पर्पस क्वेश्चंस होते हैं, राइट. तो जस्ट क्या है, जस्ट का मतलब है मेन आइडिया, की आइडिया. जस्ट कंटेंट का मतलब आपको मेन आइडिया ढूंढना है. जस्ट पर्पस क्या होता है कि ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज द पर्पस. सो यू शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट. आपको ये चीजें ध्यान रखनी है. मेनली अबाउट, मेनली डिस्कसिंग, ये जिस कंटेंट है. व्हाई डज द स्टूडेंट, व्हाट इज द मेन पर्पस, ये क्या है आपका जस्ट पर्पस क्वेश्चन. सो 2 थिंग्स जो आपको कीप इन माइंड रखनी है जब भी आप आंसर करोगे जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्वेश्चंस को. फर्स्ट इज कि इन द लिसनिंग क्वेश्चन देयर विल ऑलवेज बी ईदर जिस कंटेंट. हमेशा आपको या तो जिस कंटेंट क्वेश्चन मिलेगा या जिस पर्पस क्वेश्चन मिलेगा, बट नेवर बोथ, दोनों नहीं मिलेंगे. दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज बी द फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग टू द पैसेज. जब आप पैसेज को सुन लोगे, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा. और समटाइम्स इसमें क्या होंगे, लेक्चर्स होंगे, कन्वर्सेशंस होंगे, और इट कैन हैव 2 मेन आइडियाज. इसमें 2 मेन आइडियाज होंगे. सो इस केस में जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्वेश्चन में आस्क यू टू चूज 2 of the 4 ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ जस्ट 1. यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आपको 2 को चूज करना होगा 4 ऑप्शंस में से इंस्टेड ऑफ जस्ट 1. ठीक है. तो जिस कंटेंट और जिस पर्पस क्वेश्चंस हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन रहते हैं. समटाइम्स इसमें 2 मेन आइडियाज होते हैं. सो व्हाट आर द टिप्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर. कौन कौन सी टिप्स आपको याद रखनी है जिस कंटेंट क्वेश्चंस के लिए, कि आपको एक्टिवली सुनना है अपने मेन टॉपिक को. मतलब जब आप कन्वर्सेशन को हेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो, आपको एक्टिवली सुनना है.
ताकि आप अपना मेन टॉपिक और अपने प्राइमरी पॉइंट्स को क्या कर पाओ, फोकस कर पाओ। सेकेंड इज माइनर डिटेल्स को इग्नोर करना है, फोकस करना है बिग पिक्चर पे, राइट, द बिगर आइडिया। ब्रीफ नोट्स, आप नोट्स भी कैप्चर कर सकते हो की आइडियाज के लिए, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग द नोट्स इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू, यू कैन मेक योर नोट्स। आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम ऑफ सब्जेक्ट, उस थीम को आइडेंटिफाई करो कि ऑडियो में आपको क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या कंटेंट है इसका, राइट। कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट एंड स्पीकर्स टोन, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑडियो है, ये कन्वर्सेशन है, और स्पीकर की टोन क्या है यहाँ पे। सो ये टिप्स आपको रिमेंबर करनी है व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर ऑडियो। we'll do one exercise now. You have to listen to the audio and then you have to answer this question, right? So I'm going to play the conversation, meanwhile you have to focus actively. What is the lecture mainly about? Directions. Now listen to a part of a talk in an anatomy class. Now, human anatomy is the scientific study of the body's structures. Some of these structures are very small and can only be observed and analyzed with the assistance of a microscope. Other larger structures can readily be seen, manipulated, measured, and weighed. The word anatomy comes from a Greek root that means to cut apart. Human anatomy was first studied by observing the exterior of the body and observing the wounds of soldiers and other injuries. But later, physicians were allowed to dissect bodies of the dead to augment their knowledge. Now, when a body is dissected, its structures are cut apart in order to observe their physical attributes and their relationships to one another. Dissection is still used in medical schools, anatomy courses, and in pathology labs. Question 1. What is the lecture mainly about? So here you need to answer, this is just content question, कि आपका लेक्चर किस चीज के बारे में है। Dissecting the dead human bodies, background information on the study of human bodies, or what happens when the body is dissected, or physicians who learn about the wounds of soldier and other injuries. तो किस चीज के बारे में आपका टॉपिक है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, मेन आइडिया के ऊपर, आपको एलिमिनेट करना है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। मेन फोकस क्या है ऑडियो का, कन्वर्सेशन में आपको क्या बताया जा रहा है, किस चीज के बारे में, क्या डिसेक्टिंग डेड ह्यूमन बॉडीज के बारे में, या आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी गई है कि ह्यूमन बॉडीज कैसे स्टडी होती है, या फिर अगर कोई बॉडी डिसेक्टेड हो जाती है तो क्या होता है, और या फिर फिजिशियंस जो लर्न करते हैं सोल्जर्स के बारे में या अदर इंजरीज के बारे में। सो द करेक्ट इंफॉर्मेशन, द करेक्ट आंसर इज बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा था, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको किस चीज के दी जा रही थी कि स्टडी कैसे करते हैं ह्यूमन बॉडीज को, राइट। तो ह्यूमन बॉडी की स्टडी के ऊपर आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिया गया। सो अपना फोकस आपको मेन आइडिया के ऊपर रखना है, एलिमिनेट करना है आपको एक्स्ट्रा पार्ट को। लेट्स डू वन मोर, एक और करते हैं। आई एम प्लेइंग इन ऑडियो। Directions. Now listen to part of a talk in a biology class. The goal of homeostasis is the maintenance of equilibrium around a specific value of some aspect of the body or its cells called a set point. While there are normal fluctuations from the set point, the body systems will usually attempt to go back to this point. A change in the internal or external environment is called a stimulus and is detected by a receptor. The response of the system is to adjust the activities of the system so the value moves back toward the set point. For instance, if the body becomes too warm, adjustments are made to cool the animal. If glucose levels in the blood rise after a meal, adjustments are made to lower them and to get the nutrient into tissues that need it. Now, when a change occurs in an animal's environment, an adjustment must be made so that the internal environment of the body and cells remains stable. The receptor that senses the change in the environment is part of a feedback mechanism.
The stimulus, temperature, glucose, or calcium levels, is detected by the receptor. The receptor sends information to a control center, often the brain, which relays appropriate signals to an organ that is able to cause an appropriate change, either up or down, depending on the information the sensor was sending. So what do you think कि लेक्चर किस चीज के बारे में था? क्या इंटरैक्शन बताया जा रहा है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स सेंटर का, या फिर इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करते हैं बॉडी में, अब नॉर्मल फ्लक्चुएशंस ह्यूमन बॉडी के, या इंटरप्रेट करना सिग्नल्स को फ्रॉम स्टिमुलस? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सो व्हेनेवर यू आर लिसनिंग टू द ऑडियो, प्लीज अपने नोट्स को बनाओ, अपना फोकस मेन आइडिया पे रखो कि वो आपको लेक्चर में डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट कि कैसे मेंटेन होता है इक्विलिब्रियम बॉडी में. दे वर टॉकिंग अबाउट सी सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, बट दैट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन. मेन फोकस, मेन लेक्चर किसके बारे में था कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन कैसे करते हैं बॉडी के अंदर, राइट? लेट्स लुक एट जस्ट पर्पस क्वेश्चंस. जस्ट पर्पस क्वेश्चन को देखते हैं. Now again, what you are supposed to do is सो जस्ट पर्पस क्वेश्चन. अब इसमें पर्पस क्या है टॉक का, राइट? क्यों ये बोला गया? व्हाई डज द स्टूडेंट गो टू सी द कोच? क्यों स्टूडेंट गए थे कोच को मिलने के लिए, सी करने के लिए, देखने के लिए कोच को, राइट? सो आई विल प्ले द ऑडियो. फोकस ऑन योर ऑडियो एंड द मेन आइडिया. Hi, Elizabeth. Hey, Coach. I just thought I'd stop by to see what I missed while I was gone. Well, we've been working real hard on our plan for the next game. I've asked Susan to go over it with you before practice this afternoon, so you'll know what we're doing. Okay. By the way, how did your brother's wedding go? Oh, it was beautiful. And the whole family was there. I saw aunts and uncles and cousins I hadn't seen in years. So it was worth the trip. Oh, definitely. I'm sorry I had to miss practice, though. I feel bad about that. Family's very important. Yep. Okay, I guess I'll see you this afternoon at practice then. Just a minute. There are a couple of other things I need to tell you. Oh, okay. First, everybody's getting a new team jacket. Wow, how'd that happen? A woman who played here about 20, 25 years ago came through town a few weeks ago and saw a game and said she wanted to do something for the team, so... So she's buying us new jackets? Yep. Wow, that's really nice of her. Yes, it is. It's great that former players still care so much about our school and our basketball program. Anyway, you need to fill out an order form. I'll give it to you now so you can bring it back this afternoon. I've got the forms from the other players, so as soon as I get yours, we can order. Maybe we'll have the jackets by the next game. Okay. Great. And the next thing is, you know Mary's transferring to another college next week. So we'll need someone to take over her role as captain for the second half of the season. And the other players unanimously picked you to take over as captain when Mary leaves. Wow. I saw everybody this morning and nobody said a word. They wanted me to tell you. So, do you accept? Of course. So an example of a So why does the student go to see the coach? क्यों गई थी वो कोच के पास? To see how she would prepare for the next game, or to find out her responsibilities to team captain, or to find out what happened while she was away, or to discuss the style of a new team's uniform. So basically she went check करने के लिए कि जब वो उसने क्लास नहीं अटेंड करी थी तो what was the things happening, है ना, क्या हुआ था. And then conversation में the coach was telling him also, उसको बता भी रहे थे कि that these things were done, है ना. So to find out what happened while she was away. So here just purpose questions में you can listen to the conversation, notes बनाओ and focus कि student
क्यों गया था वहां पे, व्हाट इज द पर्पस, यहाँ पे मेनली पर्पस एंड व्हाई डू द स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चंस आपके पैराफ्रेज रहते हैं हमेशा. सो फोकस ऑन द कन्वर्सेशन वेरी केयरफुली. लिसनिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू शुड नॉट लूज योर कंसंट्रेशन. विजिट द बेबी कोड ऐप एंड यूट्यूब हमारे सेशंस को देखने के लिए. टेक योर फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, टेक एन एडवांटेज ऑफ इट. यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग एट वन स्टॉप. ठीक है, आपको एक ही जगह पे, एक ही एप्लीकेशन पे, यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. It will be a game changer for you because you will be getting vocabularies also here, phrasal verbs, collocations, everything is there in our application. So stay tuned and join us on the Instagram and YouTube also. Don't miss out. Practice karo. Any doubts, any queries, drop your comments in the baby code application. I'm going to solve all those queries for you. Take care all of you and do practice for just content and just purpose questions.